Hi everyone, welcome back to my channel Achieving Alpha and welcome back to another episode of Smart Money Analysis. And काफी time बाद ये video आ रहा है, so apologies for that. But you need to understand that as a creator, I also need some motivation to create these videos. और अगर response ठंडा होता है तो the motivation doesn't seem to come right. So if at all the response seems to be good, so I would like to continue this series, but it all depends on you guys. So if you genuinely like the content, then I would appreciate if you could press the like button. और अगर कुछ और suggestions है then you can let me know in the comment section as well and I'll be happy to take up those. And lately I have been posting updates on Telegram. So if you are connected to the Telegram channel that we have, तो उस पे I try to post some of the trades which I take and what is my view on the market. And you can see the public record. It's all available on the public Telegram channel. And if you think that my views make sense, then you can, of course, follow them, or you can totally ignore them and say that whatever I say is crap. So up to you. You are the judge here. So basically, let's talk about today's market. So today we saw the weekly expiry. There was the MPC meeting from RBI as well. कुछ खास उसमें ऐसा आया नहीं and it was I told you basically that these people lack the spine to do what is needed to be done because it has been I have been observing this that not to pick up any political comments here but I have been observing कि अभी वाला जो RBI है that is basically following much of what US Fed is doing. अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया so we are also keeping the repo rates and reverse repo rates to be the same and maintaining an accommodative stance. But what we need to understand is that inflation is going through the roofs. You have a look at crude oil, or you forget crude oil. You have a look at the prices of fuels, basically petrol and diesel. सब्जियों के rate आप देखो. So everything is turning expensive, and there's no hiding, right? So I think that there should be some steps that should be taken in order to basically stop this easy liquidity available in the markets. Just say the inflation could be controlled and it is eventually good in the longer run. But this is India or elections तक यहाँ पे सब ऐसे ही चलेगा. Again, enough of jargon. So let's talk about the markets. Let's try to analyze the markets and see what we can expect. So we'll start off with the daily time frame chart, and again last 3 days you will see that नीचे से अच्छा buying pressure रहा है, and again the candles have been decent. एक resistance है इधर that is in the 17,610 to 17,650 zone, but once that is taken and data को देख के लग रहा है कि that will be taken out yesterday. Again depends on the global markets as well कि how does the global markets turn up. But for now things are looking positive and आज की expiry भी sort of was positive. तो आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया उसके पहले वी सॉ सम नेगेटिव मूवमेंट उसके बाद एक से दो कैंडल में द गेम वाज टोटली फ्लिप्ड और इट वाज फ्लिप्ड इन द फेवर ऑफ बुल्स एंड बुल्स बेसिकली टुक द मार्केट अप. तो दिस इज व्हाट वी हैव बीन सीइंग कि लास्ट 3 डेज में द प्राइस एक्शन हैज बीन डेफिनेटली बुलिश एंड पहले यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर हुआ. डेथ क्रॉस ओवर इज बेसिकली व्हेन शॉर्टर टाइम फ्रेम ईएमए कट्स अ लॉन्गर टाइम फ्रेम ईएमए फ्रॉम द टॉप. तो यहाँ पे यू कैन सी कि 20 ईएमए कट द 50 ईएमए एंड अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गोल्डन क्रॉसओवर होगा विच इज बेसिकली 20 ईएमए कटिंग द 50 ईएमए फ्रॉम द बॉटम. तो लेट्स सी. एनीवेज काफी ज्यादा कन्वर्ज हो रहे हैं दोनों ईएमए सो नॉट अ लॉट कैन बी सेड हियर बट यू कैन सी कि जो क्लोजिंग है दैट इज अबव ऑल द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस व्हिच इज डेफिनेटली पॉजिटिव. One of the things which I am quite skeptical about is the volumes. So volumes when you will see कि जब भी upside आता है तो volumes are not very high. So maybe I will show you on the trading view chart and it will make more sense. But okay, just wait for this. Where is Nifty Futures? Yes. So one day के volume पे you will see कि whenever there is selling, so the volumes are typically more. And today you can see कि जो 20 day का SMA है volume का, it is not even able to touch that. So again volumes are quite dim and this has been the trend which I have been observing कि जब भी up move आ रहा है so the volumes are not that high and that's the reason कि up move sustain नहीं कर रहा है. दूसरा रीजन ये है कि बेसिकली FIIs when they want to sell they would ideally want to sell at higher levels. तो बेसिकली दे सेल जैसे यहाँ पे दे सोल्ड क्वाइट हेवीली एंड देन 17,000 से DIIs एंड द रिटेल मनी पुश द मार्केट अप and then FIIs basically get a good price to basically clear out their holdings and also better price to create the shorts at higher levels. So that's what we have been seeing. And again you can see कि जो futures का premium है that is not very high and अभी तो हम almost mid of the month में है so you will see कि
even being in mid of the month, we haven't really seen a really high premium difference है ना. तो generally the future trades at a decent premium, 30-40 points पे तो रहता ही है, and towards the end of the month it converges with the spot और expiry पे it is equal to the spot. I am sure ये सबको पता ही होगा. And even Bank Nifty futures, you will see कि the premium is sort of diminishing. तो typically 100 points तो रहता ही है. When the market is really bullish, it is more. But अभी you can see it's almost 25 points only. VIX आज गिरा है, so definitely some of the option sellers would have got the benefit of this. आज IVs भी high थे options के. You must have seen कि RBI की मीटिंग के पहले IVs were typically close to 40, I guess, if I'm not wrong, in Bank Nifty. तो काफी ज्यादा volatility थी, and after that cooled off. तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिला होगा. एंड दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, तो इस पे आई बेसिकली सेट की आरबीआई कीप्स रेट्स अनचेंज, मेंटेन्स एन अकोमोडेटिव स्टांस. एंड उसके बाद आई बेसिकली टुक दिस ट्रेड इंट्राडे. तो बेसिकली आई शॉर्टेड 39,200 कॉल ऑप्शन एट अराउंड 98 एंड 39,300 का कॉल ऑप्शन. ऑल्दो इसमें काफी ऊपर नीचे हुआ, मार्केट काफी उठापटक हुई, बट डेफिनेटली एट द एंड ये जीरो पे बुक हुआ. एंड लास्ट में आई डिड सम माइन्यूट ऑप्शन राइटिंग, 13 रुपए का ऑप्शन बेचा था फॉर 17,650. एसएल वॉज 30 रुपीज, जो हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम थी. हो भी सकता था बट कम थी. एंड डेफिनेटली ये भी जीरो हुआ है. सो दैट हैज बीन अ गुड डे फॉर ऑप्शन सेलर्स. यहाँ पे अगेन परेशान हुए होंगे लोग, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी थी और बीच में एक अप मूव आया था. बट दैट वाज मोर ऑफ एस एल हंट, एंड अल्टीमेटली प्रीमियम जीरो हुआ. तो 39,000 के स्ट्रैडल राइटर्स को अच्छा खासा फायदा हुआ होगा आज. दैट्स व्हाट वी हैव बीन सीइंग. और नाउ लेट्स गो एंड एनालाइज द मार्केट. तो विल स्टार्ट ऑफ विथ द मार्केट मैप. विल सी कि निफ्टी में क्या हो रहा था. तो विल सी एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी निफ्टी में. विल सी 39 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड 11 वर डिक्लाइनिंग. एंड टॉप गेनर्स में वी बेसिकली हैड ओएनजीसी, टाटा स्टील एंड इन्फोसिस एंड सम ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स. तो एंड टॉप लूजर्स में वी हैड मारुति एंड बीपीसीएल, गेल, एंड these are the stocks which you can see. So definitely it was a broad based rally. 39 stocks advancing, 11 declining. सेम इन निफ्टी बैंक, ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे, 2 डिक्लाइनिंग. फिन निफ्टी अगेन 18 एडवांसिंग एंड 2 डिक्लाइनिंग. एंड इन जनरल इफ वी हैव अ लुक एट ऑल द एफएनओ स्टॉक्स, तो अगेन 128 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड 71 स्टॉक्स वर डिक्लाइनिंग. तो अगेन दिस ऑल लुक्स हेल्दी और ब्रॉड बेस्ड रैली है, तो दिस इज जस्टिफाइड. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शन चेन. तो सिंस इट्स थर्सडे, तो अगले वीक की ऑप्शन चेन में ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं. बट अगेन लेट्स सी. तो अभी हाईएस्ट ओआई ऑन द पुट साइड happens to be at around 16,500, but again इसको neglect करके we can consider this only. तो आज यहाँ पे you can see aggressive put writing हुई है on 17,600. तो again this should act as a good support. and basically अगर और ऊपर देखेंगे तो calls में basically जो highest OI है that is also at 17,600 for now. तो क्यूमुलेटिव ओआई की मैं बात कर रहा हूँ, अराउंड 27 लाख शेयर्स आर देयर. बट एज सेड कि ज़्यादा इन्फर नहीं कर सकते इस ऑप्शन चेंज से, बिकॉज दिस इज टू अर्ली और यहाँ पे बिल्डअप इतना नहीं है. सरप्राइजिंगली कुछ ओआई रिड्यूस हुआ है. सो आई थिंक ये रिड्यूस इसलिए हुआ है क्योंकि पीपल हैव शिफ्टेड द ओआई फ्रॉम लोअर स्ट्राइक्स टू द हायर स्ट्राइक्स. तो 17,400 अगेन एक अच्छा ओआई आज गेन हुआ है, एंड क्यूमुलेटिवली अराउंड 23 लाख शेयर्स है. व्हाट्स इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व इज जो ओ आई पी सी आर है दैट इज एग्जैक्टली एट वन. तो काफी टाइम बाद ये वन देखने को मिला है, एंड दिस पॉजिटिव. तो ऑप्शन चेन ओवरऑल इज लुकिंग पॉजिटिव, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. और अभी के लिए इट्स टू अर्ली टू से समथिंग, बट फॉर नाउ लुक्स की पुट राइटिंग इज मोर एंड कॉल राइटिंग इज रिलेटिवली लेस, बट स्टिल द पीसीआर इज एट वन. तो दोनों साइड प्लेयर्स हैं. प्रोबेबली टुमारोज डेटा विल मेक मोर सेंस. तो लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन चेन फॉर बैंक निफ्टी एज वेल. बैंक निफ्टी में बट अगेन ज़्यादा पॉइंट बनता नहीं है इसको डिस्कस करने का, बिकॉज बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ओआई एक्टिविटी काफ़ी कम रहती है, ओपन इंटरेस्ट यूजुअली कम रहता है, एंड इट्स ओनली थर्सडे. बट एनीवेज एक बार फटाफट से नज़र फेर लेते हैं. तो हाईएस्ट क्यूमुलेटिव ओआई स्टिल एट 38,000. लाइक पीपल आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट यू कैन सी कि 39,000 पे भी एक डिसेंट ओआई है कंपेयर टू 38,000 ओनली. एंड अच्छा खासा ओआई यहाँ पे बना है, सो पीपल आर मे बी कॉन्फिडेंट कि बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है. ऑल्दो काफी रेजिस्टेंसेज है यहाँ पे बैंक निफ्टी के पास, बट एनीवेज विल सी दैट. एंड कॉल साइड पे यू विल सी कि जो हाईएस्ट है दैट इज स्ट्रेट अवे एट 40,000. तो 40,000 पे देयर इज अ क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ ऑलमोस्ट 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स. 40,000 आई थिंक जाते में काफी सारे रेजिस्टेंसेज आएंगे बीच में, बट एनीवेज विल सी क्या होता है. एक बार ग्लोबल मार्केट्स पे फटाफट नजर फेर लेते हैं. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग नाउ. ग्लोबल मार्केट सडनली रेड हो चुके हैं. आई डिड नॉट रियली एक्सपेक्ट दिस. तो ये काफी फ्लैट चल रहे थे बीच में, बट यू कैन सी कि नैस्डैक सडनली रेड हो गया. एंड उसका रीजन आई हैव बीन टेलिंग यू. ओके, द बॉन्ड यील्ड्स आर एट 1.97. दिस इज रियली बैड. तो डेटा इज पॉजिटिव, डेटा पे भी आएंगे, विल हैव अ लुक एट द डेटा. बट लग रहा है ऐसा देख के कि कल डेटा विल नॉट वर्क, और अगर ये ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी नहीं आती है
तो मे बी एक बाउंस आएगा और जो लॉन्ग्स क्रिएट हुए हैं एफआईआई के थ्रू दैट वुड बी टेकन ऑफ। अभी अगेन आते हैं डेटा पे इसके बाद, बट दिस इज नॉट गुड। लाइक आई टोल्ड यू कि जब ये 1.92 जा रहा था, एट दैट मोमेंट ओनली आई टोल्ड यू कि कैटास्ट्रॉफी आएगी आगे, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द मार्केट्स। 1.97, आई मीन इट्स टेरिबल। और अगेन फॉर अस, crude oil, Brent crude is again above 92, again not a very healthy sign. And you can see कि sell off is across asset classes. तो crypto में there is sell off, global markets में there is sell off, but anyways let's see कि how does this turn up. तो आई थिंक देयर आर 45 मिनट्स टू गो फॉर द यूएस मार्केट टू ओपन। अगर ये रिकवर होता है तो ठीक, अदरवाइज दिस इज नॉट गुड। एंड यू कैन सी कि हमारा मार्केट भी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स फॉल कर चुका है, जो फ्यूचर्स है बेसिकली, जो एसजीएक्स निफ्टी है। तो थिंग्स आर अगेन नॉट लुकिंग गुड इन द ग्लोबल मार्केट्स। डेटा पॉजिटिव था, बट लुकिंग एट ग्लोबल मार्केट्स आई एम कंसर्न नाउ। एनीवेज फटाफट से डेटा को एक बार देख लेते हैं, देन विल रैप दिस अप। तो दिस इज द डेटा दैट वी आर लुकिंग एट। तो एक बार चलते हैं डेटा पे, एंड विल स्टार्ट ऑफ विद द इंडेक्स फ्यूचर्स एज यूजुअल। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में यू विल सी कि आज अच्छे खासा लॉन्ग्स ऐड करेगा और शॉर्ट्स भी कवर करेगा। काफी टाइम बाद ये जो रेशियो है नेट लॉन्ग इन इंडेक्स फ्यूचर्स दैट इज अबव 50, सो दिस इज अगेन पॉजिटिव। एंड स्टॉक फ्यूचर्स में अगेन एक्टिविटी पॉजिटिव है, बट बहुत ज़्यादा मैसिवली पॉजिटिव तो नहीं है। लाइक ऑलमोस्ट 4700 लॉट्स ऑफ लॉन्ग्स एडेड और 2500 लॉट्स के अराउंड शॉर्ट्स कवर हुआ है। बट अगेन इंडेक्स फ्यूचर्स इज लुकिंग पॉजिटिव, स्टॉक फ्यूचर्स इज ऑल्सो लुकिंग पॉजिटिव। ऑप्शंस का डेटा ज़्यादा एनालाइज करने के लिए है नहीं, बिकॉज सिंस देर इज एक्सपायरी तो हर जगह से ओआई वाइंड अप हुआ है। बट स्टिल जो नेट पुट इज टू नेट कॉल वाला जो रेशियो है दैट इज क्लोज टू 2 टाइम्स। तो ऑलमोस्ट जो नेट पुट्स हैं जो बाय किया है एफआई ने, दैट इज क्यूमुलेटिवली 2 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ कॉल्स विच दे हैव बॉट इन द इंडेक्स ऑप्शंस। तो दिस इज व्हाट वी हैव। और ये डेटा इन केस एनीवन इज इंटरेस्टेड, सो वी हैव अ डेटा सब्सक्रिप्शन ऑन अ मंथली बेसिस। 300 रुपीज़ का ये सब्सक्रिप्शन रहता है, इसमें यू गेट दिस पर्टिकुलर डेटा। तो कितने कॉल्स बाय किए, कितने पुट्स बाय किए एफआई ऑन अ डेली बेसिस, इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या एक्टिविटी थी, स्टॉक फ्यूचर्स में क्या एक्टिविटी थी, एंड सो ऑन। और इसी के साथ वी गिव दिस डेटा फॉर द प्रो डेस्क एंड द रिटेल एज वेल। तो दिस इज व्हाट वी हैव। और दूसरा डेटा वी प्रोवाइड इज फॉर द स्टॉक्स। तो यू विल सी कि एफएनओ स्टॉक्स के लिए भी बेसिकली कंसिडर द टॉप 20 स्टॉक्स इन निफ्टी, एंड उसमें यू कैन सी कि कहाँ पे क्या एक्शन हुआ। सो दीज आर द पर्टिकुलर स्टॉक्स, परसेंटेज वाई चेंज, what was the action, and again these are the delivery percentages. तो you can see कि in the top 20 stocks in Nifty 50 almost 55 में short covering हुई है, और बैंक निफ्टी में almost 80 में short covering हुई है। तो आज की रैली you can consider more of a short covering move, बट यहाँ पे जो aggressive long build-up है in index futures, that is one of the things which you need to be cautious about. But again as said कि global markets पे काफी कुछ depend करेगा, and this is not looking good. Like this could further intensify अगर ये आज 2 क्रॉस कर देगी US 10 year bond yield, तो दिस कुड रियली बी कैटास्ट्रॉफिक। और एक और हिंट है दैट वी माइट बी हेडेड टुवर्ड्स अ रिसेशन, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व। अब इसके बारे में इफ यू वांट आई कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो, बट दिस इज वन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक्स व्हिच यू कैन गूगल अबाउट। एंड जब ये जो यील्ड कर्व है वो इन्वर्ट हुआ है हिस्ट्री में, यू कैन सी कि एक खतरनाक रिसेशन आया है। सो ऑलमोस्ट एवरी टाइम दिस पर्टिकुलर वन इंडिकेटर हैज प्रेडिक्टेड द रिसेशन वेरी वेल। So if you want a detailed video on this, do let me know in the comments and I'll be happy to make one. But अभी देख के लग रहा है कि the global markets are bleeding, and अगर ये recover नहीं हुए, so कल एक bounce जरूर आएगा। bounce इसलिए आएगा क्योंकि basically these people would require exit। तो स्मार्ट मनी ने आज जितना भी लॉन्ग बिल्डअप किया है इन इंडेक्स फ्यूचर्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स, दे वुड बेसिकली नीड एन एग्जिट विंडो। तो उसके लिए एक बाउंस आ सकता है, बट अगर नेगेटिविटी सस्टेन होती है इन द ग्लोबल मार्केट्स, देन इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी सिनेरियो। तो आई थिंक हो चुका है ऑलमोस्ट 15 मिनट के आसपास का वीडियो, तो लेट्स रैप दिस अप। एंड आई होप आज का वीडियो वाज यूजफुल, एंड एज आई सेड कि इफ यू आर रियली लाइकिंग द कंटेंट एंड इफ आई गेट गुड रिस्पॉन्स, तो आई कैन ऑल्सो रीडू दिस एनालिसिस डेली, बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइज। तो आई think this is it for this video then. Thank you so much for sticking around till the end. And I hope that Telegram पर जो भी updates मैं देता हूँ that are useful. अब trade लेना या नहीं लेना that is up to you guys, because see, if you are fearful in this markets and if you don't believe in my analysis or your analysis, then there is no point in taking trade. But if you have that conviction and if you are ready to manage your risk accordingly, you should definitely not miss out on the opportunities. तो ठीक है यार, let's wrap this up. This is it for this video then. Hope you enjoyed this particular one. If you did, please consider pressing the like button. और अगर कोई suggestions है तो you can let me know in the comment section as well. So thank you so much for watching this video till the end. Have a good day. Take care and bye bye.